welcome back to the Sales Wala show. Today, I, Sanush Srivastava, will be speaking to Mukesh Chaudhary, the country head of Rapoo Technologies India Private Limited, one of the leaders in wireless technology for computer peripherals. It is something that is changing the world globally. And today we have the country head himself to talk about कि क्या changes है, sales कैसे होती है, specifically about channel sales and a lot of it. So मुकेश सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम मतलब Thank you. Thank you also, Sanat, for calling me and giving me opportunity to discuss with you and tell you something about whatever I know. you definitely know a lot and more importantly Mukesh, since I know you from past as well and I've known you even before I started college and all. I knew that you are somebody who knows channel sales better than a lot of other people out there. Basically, because of the fact that computers have always been selling through channels, and lately only वो online आई हैं सारी चीजें ever since boat and related products came up. So सबसे पहले तो I would just want to know कि what does Rapoo Technologies do differently and what is channel sales as a concept? थोड़ा उस बारे में if you can throw light. Yeah, sure. So first, let me explain what exactly we are doing as a company, Rapoo. So Rapoo basically the name is little different. We will find RAPOO. So Rapoo is basically made up with RA from radium or PO coming from Apollo, and O is original. So what we saying, radium is unique, Apollo is consistent, and radium is unique and innovative also. And as I said, PO is coming from Apollo, that is the consistency, and O is original. So we say we give innovative quality product which is originally designed, and that's we provide consistently throughout the last 10-15 years. Now, so if it comes to the channel marketing or channel sales, what do you say? So in Rapoo, we as a company focus more on channel sales. Why? Because channel sales, because in IT, apart from few products like which is directly goes to the end customer, most of the products go in bundle with the systems. Like if you go and make a system, some product, some hard disk will be there, motherboard will be there, monitor will be there, keyboard will be there. So the exact customer for us is not the end customer. Exact customer is the channel guy who is making this PC and giving to the end customer, because this guy make a whole PC as a unit by assembling all the products and giving to the customer. So as a company, we focus more on these partners, and we try to give them as a quality product with a current innovative and the current trend of technology, so that while selling to the customer, the customer is feel happy by getting this particular PC. So our focus is more on channel and channel partners. I see. So मुकेश जी, channel की जहाँ तक आप बात करते हैं, I really would like to understand in terms of sales कि first of all, what is a channel when you say that? As far as I understand channel, it is the retailer market. Basically, you are selling B2B and you are not dealing with the customers directly. One. And what exactly is a channel partner then? Exactly. So there is a two prospect of this product, this question. One is from our side. One is from like our as a company side. Company side, the channel will be the distributor who is importing or who is purchasing directly from the factory. Then distributor bills to like some stockists or some regional distributor, and then regional distributor bills to the retailer. So these all three are the key channel partner for us. If I go through in the customer point of view, retailer is the main channel partner for them, because he generally goes to the retail customer, and retailer is a different, like few, even like the guy who is going to buy online, that's also a retail, but it's a e-commerce retail, online retail. So that's also one channel.
then some customer goes to buy product from the large format retail outlet. So that's also a channel for them. And some go the small retail stores on the street and somewhere. So all these Correct. are for the end customer point of view, these are the channel. And for us, all the layer who supply from factory to the customer, this all the players in between is the channel partner for us. Okay, so आपने e-commerce की भी बात करी. This is a major question that I have always had in my mind, that in today's era when everything is digital, you know, companies like Rapoo, named Logitech, and all the other brands, Asus, the computer electronics brand, Microsoft, whatsoever, they are majorly still focused on offline markets only. Markets like Nehru Place in Delhi, which is one of Asia's largest market in terms of computers and electronics. तो ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन सेल्स कैसे होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट? So uh, let me give you some example of the mature country who is already doing very good in online and digitally. Like if you go to China, if you go to US, where the online things has grown at a very much good level. There also you will find the share between online versus offline is 50-50. It's equal. Why? Because shopping and buying, it is still you feel a lot of enjoyment of buying and shopping things, and it also gives you a feeling of pride while buying and shopping things. So even though online things will be there, but there are 50% of population who will go see the product, select out of that which is the good one, and then buy. And this trend is already there, who is already doing very wonderful job in online platform. Because if you see, in China, being a big market, they are like, if you order anything before 10 a.m., they will deliver you by evening today, that day itself. And राइट, any सेम हियर. order after 10, you will get the delivery on the next day. So even so fast delivery, everything infrastructure wise, even though people still the channel, the retail counter, no, I mean the retail counter, the normal retail counter which is on the store, or they are still working, because all the given say the 50% people still go to the retail counter and buy the product by seeing, inquiring, making after discussing with the shop owner, because these are technology products. And in our case, mostly it might be true that in case of mobile and in case of clothes, you will find the percentage will be higher, because there is not much technology attached to, and mobile is a complete set unit. You know everything wherever you buy from there. But in our case, there is a lot of technology differences. So many of time, people used to go to the go to the retail counter, talk to this owner. Sometimes he suggests something, because sometimes you know something about the new technology, and then you decide to buy. So आई सी. whatever the case, 50% will be there, still will be there. But India in itself, online is not more than 20% as of now. 80% ओके, is still offline sale in most of the cases, except mobile. Mobile is 27-28% now. राइट, बट दैट इज अ नंबर दैट इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज फॉर कॉमन पीपल हम लोगों को तो यही समझ आता है कि यार ऑनलाइन इज बूमिंग एंड ऑफलाइन इज गेटिंग हिट, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हियर फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स. हाउएवर, Yeah. Hmm. the question that arises is कि when people are talking about online sales, they are talking about discounted products majorly, because the fact is that brands like platforms like Amazon and Flipkart, they offer huge discounts at least once in every quarter, if not more than that, right? Moreover, on electronics, the discounting is seen to be higher side. चाहे वो mobiles हो, laptops हो, companies like Boat which have come up giving very economical electronic appliances. So वहाँ पे how do you आंसर दैट क्वेश्चन जब आपका सेल्स पर्सन आपसे आके बोलता है कि बॉस, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बिना डिस्काउंटिंग के बिक नहीं पाएगा? हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन? So it's
So now, so far as discounting is concerned, ना, क्या था जब when this Amazon and Flipkart they have started their business, they are into the cash burning, and they're still now also cash burning model where they burn a lot of cash to acquire customer database or to acquire each one of us as a customer. But slowly the trend of discount what it was 2 3 years ago earlier, it's now not there. First, second, now the offline retailer is also now very smart. So now he when he was buying from a company like us, he formally and say, if my selling price to end customer and online selling price to end customer is not equal, then he will not buy and he will not entertain that particular brand or that particular product where online is selling less and he is selling higher price. So Correct. now the ecosystem has evolved in such a way that offline guy also giving same price and same discount vis-a-vis these guys are also selling same price. So you will not find a lot of difference what is it used to be 2 3 years ago. I mean, this is something I can agree, because nowadays discounting on Amazon is being very limited. Even though they show you okay, the product is heavily discounted, but end of the day it is not. If you go It's out in the market, you'll see. so that if you the discount is also very subjective thing in terms of understanding, I'm telling you why. Because if you see now, since when the GST has come, there is a no rule of MRP. Previously there was a rule of MRP because custom duty was custom duty was calculated on the basis of MRP. Now Correct. MRP thing is not there. So even if your cost is 200, you can keep MRP at 1,000 rupees. Previously, what people used to do, if your cost is 200, you keep MRP 300 or 400 maximum. Okay. Right. So now what normally they show, they give you the price of 1,000 rupees MRP and show 50% discount and give it Correct. to you at 500 rupees. 500 So rupees. so that's it's look like a 50% discount, but even if you go offline, that discount is almost you will find in the offline also, store You're also. right. You're right. In fact, as a matter of fact, even on the online stores of the same very brand, we notice that the pricing is similar what Amazon is offering as a discounted pricing, which is more or less probably 50 or 100 rupees less than the original product price on the website itself. That's an important thing to note. All right. Now going forward with this channel sales conversation that we are having, see, online may things are being pulled from the market. That is what we can see. Apart from the advertisements and all, most of the time as a user we search for things. However, in offline sales, your sales agents are going down on the market, and वो जाकर individually हर एक retailer को partner को they're selling the material, and they're pushing numbers over there. In your industry, everything comes in quantity, कि इतने पीस जाएंगे, इतने पीस नहीं जाएंगे. So what happens when your salesperson comes back to you कि सर मार्केट स्लो है, मार्केट अभी डीलर नहीं उठा रहा है माल. Because this is a term, since my father has a background from similar industry, I used to hear ki the managers, the field executives are saying ki sir market abhi maal nahi utha rahi hai because market is running very slow. So किस तरह से एक सेल्स मैनेजर अपने फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन का, एंड हाउ कैन दे मोटिवेट देम टू गो एंड सेल? So I still feel the market is slow is like the meaning what they want to say, that the customer inflow is not much what is expected in the market. Okay. But like what we say, every problem comes with some solutions. Okay. So if you even this every store is not ready to buy, but every store has some expenses for themselves, so they have to sell something to meet all the expenses and get some money to home, because her home expenses also attached with this particular store. Okay. So Correct. whatever the slow thing, a store guy has to do some business to get his some expenses to run his company and run his home. Okay.
our idea is how to get his mindset, so that whatever he is selling, he can sell our product. So that's the idea, what we can work on. Now for that thing we have to think, we should give some or other channel incentive program, so that this particular showroom guy or retail guy interested to keep your stock and sell, so that he can get more margin, and he can run his business with this, even with the lesser sale, because getting more margin, he can run his store as well as his home. I see. No, So that's the actually a good report. channel incentive program is, it's works wonder there. Brilliantly over there. No, I understand now that this is actually a very nice thing कि ultimately वो कुछ तो बेच रहा है. So why not sell your product? So why are you coming back home Exactly. saying कि माल नहीं बिक रहा है? कुछ तो बेच के he is running his house, right? So instead Otherwise of he any cannot, other na, thing, because he can, yeah, right. So instead of other things, he can sell yours. Fair point now. correct. So Mukesh, next thing that I have for you is the rapid fire round. I'll ask you a few questions about sales, about your career, and we're expecting a fast response to it. Okay. So let's just get started. There are 5, 7 questions that I want to ask. And let's start with a very Okay. basic question. What is it that you love as a sales manager? To create new market. Okay. And what is it something that you dislike about sales? Coming someone saying me it's not possible. And like how do you elaborate on like that? like like if somebody comes and say, ये तो नहीं बिक सकता करके, Right. but what I feel, everything can be sold. All right. Okay. Now, there is the next question is that would you be willing to offer more discount in order to get a client in terms of the price value, or will you be willing to offer more discount in terms of the product value, as in quantity बढ़ा दिया for the same price? What it is, what would be your strategy? Sorry, come again. All right. So let me repeat the question here. I'm saying that what would be your discounting strategy for your market कि आप price घटा दोगे, quantity same रखोगे, so that you get lesser money but the product is sold, or would you just say कि sir price cannot be reduced but you can get more services, additional benefits or additional product for the same price? So as a company, I works with the second option. We don't discount the price, we give something extra benefit by keeping more and more quantity, by getting more and more quantity. All right. Now, the next question that comes to you is if we are talking about sales hiring, since in the field of channel sales, you have a lot of field executives. What is that one question that you always ask as a sales manager while hiring sales professionals? Yes, two things I ask first. So normally I ask that, are you ready to accept the feedback? So Okay. most of the time they say yes, because even if I am not ready to accept the feedback, but I say yes. So if you come to know, once you discuss a lot of things, then you come to know that he is ready to accept the feedback or not. The second Okay. most thing is how, what he see, like वो कितना उस ग्रो होना चाहता है, like मतलब Okay. in field of sale. That's the major role, because अगर वो ग्रो होना नहीं चाहता है ना, whatever if he do, he will be happy in selling only few locations. But if he is now a sales executive, he wants to become a country head, he wants to become regional manager, he wants to become, so then you can easily hire that guy, because he has a hunger to grow, not hunger to earn money, he has hunger to grow. Because if he grow, money will automatically follow him. तो अगर उसको हंगर है ग्रो होने का, he will keep learning everything, he will keep fighting with every market, he will keep doing his targets, because उसको he has a clear idea, grow होना है तो targets complete करते रहने होंगे उसको लाइफ में. So that's the Fair. major thing what I ask. Fair thing. Now, my second last question of rapid fire round. Would you prefer a sales professional with a master's degree in probably
marketing and sales whatsoever, or would you prefer a sales professional with not a master's degree but having 2 years of sales experience in during that duration? So I will go with the 2 years of experience one, because any business needs some commercial knowledge. And Okay. coming from MBA directly from the college, it's very difficult to have a commercial knowledge in the start itself. He will also get I after see. 1 or 2 years, but without commercial knowledge, he will not able to grow in sales very fast. He will As stuck up fast as somewhere, the because other guy. हाँ, because you should understand कि कितना डिस्काउंट देना है, क्या बिजनेस होना है, इतने डिस्काउंट Right. से क्या मिलेगा, Correct. यहाँ पे इतने क्वांटिटी के लिए डिस्काउंट देना अच्छा है कि क्वांटिटी छोड़ देना अच्छा है ऑर्डर को. दैट्स ऑल ही नीड्स टू हैव अ Correct. अंडरस्टैंडिंग. वो 1-2 साल बाद करने से आता है ऐसा करके. Sounds fair. All right. So, on the basis of that, I have one more additional question here. Would you choose a client जो कि छोटा client है but easy to gain है, a channel partner जो कि थोड़ा छोटा है amount पे लेकिन वो जल्दी से मान जाएगा, or will you go after a larger client but it is tough to obtain? Which one would you choose? सी जो ऑपरेशन के हिसाब से टफ वन इजी विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस मोर, बिकॉज एनीवे इट्स या अगर छोटा भी है बट हिज, देखो एक वर्ड है ना इन एमबीए, एवरीबॉडी इज मस्ट बी रीडिंग द वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेन सिस्टम पढ़ते हैं हम, क्या बोलते हैं उसमें. सो Right. एवरी चैनल नीड्स टू ऐड सम वैल्यू बिफोर डिलीवरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप. ठीक है, तो Correct. जो चैनल अगर छोटा भी है लेकिन उस अपने आपके सिस्टम में वैल्यू ऐड कर रहा है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन द बड़ा चैनल है और कुछ भी नहीं करके लेके बस स्टॉक लेके घर में बैठा हुआ है और कोई वैल्यू Right. चेन, Right. वैल्यू सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स इज नॉट यूजफुल. I understand that. That's actually a very, very clear answer. Now, ending this rapid fire round with a very personal question for you. If you could go back to the starting of your career, what would you tell the then Mukesh Chaudhary about sales? क्या tips होंगी? Tips from like So what do नहीं, you what want would you exactly? tell? What would you tell your own self आज से जब आपने career Okay. start किया था कि sales के बारे में? Okay, so again, same story. Matlab, I always say myself, if I would have worked 2 years and then went to the MBA course, that will be more beneficial as of now. Okay. Second, what I understand, what I say myself, I should have more financial knowledge while coming into the sales rather than marketing knowledge. So Okay. as of now, when I was starting, I was more into sales and marketing. So but I think as of now, if I have more financial like what commercial knowledge, not the financial exactly, commercial knowledge, I would have done more better than that time, what I think. And that's why I was Wonderful. saying, that's why I was saying कि जो मारवाड़ीज एंड गुजराती जिनका फैमिली बिजनेस होता है, दे आर कमर्शियली वेरी स्ट्रांग. दे अंडरस्टैंड कि 1% क्या होता है. इफ आई गिव दिस मनी to this product, I will get this percentage. If I give this money to this product, I will give this percentage. तो वो जो commercial knowledge है ना, that's only make them the great businessmen, even they have not done MBA or anything. So Right. commercial Right. knowledge का, so while in MBA I suggest कि थोड़ा commercial knowledge भी लोगों को देना चाहिए. अगर Correct. वो because that's a very play important role while in the company, or if you are selling or doing marketing or anything. I understand. So rapid fire ends over here, but let's continue this line of discussion only. कि जैसा आप कह रहे हो कि एक MBA से पहले या फिर अगर आपको MBA करना ही करना है, somebody who wants to do masters, उससे पहले you are suggesting people should get sales experience, sales and marketing experience, right? I would just want to know कि किस तरह से somebody can actually do it, because sales भी 10 तरीके की होती है. सेल्स में इनसाइड सेल्स भी आती है, सेल्स में टेलीकॉलिंग सेल्स भी आ जाती है, वेयर पीपल आर सिटिंग इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम, क्लाइंट से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. सेल्स में आपके टाइप की सेल्स भी आ जाती है जहाँ पे यू हैव फील्ड एग्जीक्यूटिव्स. सो व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ सेल्स
if somebody wants to learn sales as a core, later on तो of course life में जाके you can always switch into different kind of sales. कहाँ से शुरुआत हो सकती है? सो मैं देखो, जो टेली सेल्स है एंड इवन द डायरेक्ट सेल्स जो है, जैसे कि जो इफ यू आर सेलिंग क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर, Right. वहां पे जो बिजनेस का ना प्रॉपर इंसाइट नहीं मिलता है. if you if you want to do this want to have experience before MBA, I must say you go for channel sales. क्यों चैनल सेल्स बोलता हूँ? क्योंकि जब आप चैनल को बेचने जाते हो ना, मतलब when you go to sell to this small retail and small count, they will help you to learn lot of things. वो आपसे पूछेगा ये कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, इसका इसका वो क्या बोलते हैं इसको इसके आफ्टर सेल सपोर्ट कौन देगा, because they are investing his money on you, his money on your product. So आपसे वो सवाल करेगा, वो आपसे फाइट करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, सजेस्ट करेगा. So आधी एमबीए तो आप वही कर लेंगे. आधी एमबीए तो आपका वही एज ए प्रोफेसर वो आपको बता देगा कि क्या क्या मतलब ये होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, ये नहीं है, प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए, आपकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, आपकी प्राइसिंग कंपटीशन से कम होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग कंपटीशन से अगर ज्यादा है तो क्या करना चाहिए आपको, बिकॉज ही हैज गिवन ऑलरेडी 30 years 20 years 15 years 10 years of his life in selling all this to the मतलब मार्केट. तो चैनल सेल्स वाला आपको प्रॉपर इंसाइट देता है. उसमें भी कैसा होता है, वो आप जब जाते हो तो पेमेंट आपको कितने दिन पे देता है या नहीं देता है, बोलता है हम अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, तो आप थोड़ा वो पेमेंट साइकिल भी समझते हो. सो ऑल दिस थिंग्स इज मतलब फॉर लर्निंग. देखो, once you learn basic things of sales you can do whatever. मतलब आप चाहे आपको जो बेचना है बेचो, डायरेक्ट सेल करना है, चैनल सेल करना है, टेली सेल्स करना है, or whatever you can do, but proper insight is you will get in channel sales only. आई अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि चैनल सेल्स में जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया है, आई ऑल्सो डिड अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप गोइंग डोर टू डोर फॉर एवरी नेहरू प्लेस ऑफिस इन ऑल द टावर्स दैट देयर इज. सो वहां से मुझे समझ आया कि इट इज ऑल्सो अबाउट हैंडलिंग अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस, because what I can see, I'm not trying to say that direct sales is not as good or not as challenging, but where I'm coming from is कि direct sales वगैरह में where you're sitting on a call, you can always ask your manager, you put the call on hold, you can ask your manager sir इसका क्या आंसर दूं. But on field sales you don't have that option, because कभी आपने फोन किया, मैनेजर ने नहीं उठाया, he is not available. So कैसे और क्या तरीके हैं, एक अच्छा तरीका, एक आइडियल तरीका ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का, फिर चाहे वो डायरेक्ट सेल्स में हो, फिर चाहे वो फील्ड सेल्स में हो, क्योंकि सेल्स पर्सन के पास ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं और उन्हें इसका सोल्यूशन चाहिए. देखो, मैं बोलता हूँ ना, सेल्स के लिए जो सबसे सबसे मेजर चीज है ना, वो जैसे कि आप अगर मान लो आप मेरा माउस बेचने जा रहे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले इस माउस को आप पहले अपने आप को बेचो. like why I'm saying, when you are confident in selling this mouse to yourself, कैसे होगा आपको पता, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन होंगे. इसका क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, कंपटीशन से कैसा है, मैं क्यों लूं, मेरे क्या फायदा होने वाला है, समथिंग. when you sell yourself you will have a lot of question to reply by to you. So once you are ready and you are confident that yes, I can buy this product because this is a good product, Right. then when you sell to the either direct or channel anywhere, the confidence is it gives lot of thing, and that time your style of handling of objection is playing a vital role for decision of for the customer. क्यों बोलता हूँ मैं, आप मेरे पास कुछ आए बेचने और आप बोलते हैं सर ले लो ना प्लीज, अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब आई फील दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू सेल, तो मुझे भी आप कॉन्फिडेंस वो ट्रांसफर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं होगा मेरे अंदर. बट व्हेन आई केम एंड आई से सर ले लो, मैं बोलता हूँ इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, एंड तो सडनली एक बार आपके दिमाग में आएगा, ओ दिस गाय इज सो कॉन्फिडेंट टू बाय सेलिंग दिस वन, तो आप फट से एक बार इंटरेस्ट लगाते हो, भले आप बाई करो ना करो, लेकिन आपका एक जो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट मेरे कॉन्फिडेंस देख के आपको आता है.
अगर मेरे अंदर ही करेक्ट करेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट ही चला जाता है, तो आप उस आगे बात ही नहीं करोगे। दूसरा, एवरीबॉडी, मतलब जो ऑब्जेक्शन है ना, हम मुझे भी पता है कि हर चीज सबको पता नहीं हो सकता है, बट करेक्ट। एस हाउ यू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन इज वेरी मच। आपने जो पूछा, अगर मैं जानता हूँ कॉन्फिडेंटली, आई से रिप्लाई टू क्लोज इट, देन फाइन। इवन इफ आपको नहीं आता है, you can confidently say yes, oh okay, this is also a nice question, but yes, give me 2 minutes time, or let me come back to you next time and give you the proper answer for this by checking this one. करेक्ट So, and पहले तो आप अपने हिसाब से सारे इन्फॉर्मेशन लेके ही जाओ, मतलब डोंट करेक्ट। गो जस्ट बाय सेलिंग कि भाई आप सर कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले लो, या माउस ले लो, या कीबोर्ड ले लो। डोंट गो बाय इन दैट मोड। सिर्फ हम्म। प्राइस के हिसाब से मत जाओ। पहले कंप्लीट, पहले अपने आप को सेल करो, टेक द कंप्लीट क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, एंड व्हेन यू डील विद कॉन्फिडेंटली, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, डील कॉन्फिडेंटली। यस, good question, let me answer you in some time, and हाँ, or when I come आप एक to you स्टेप next time, बैक I ले will सकते answer हो। you. Yes, yes, राइट। it's fine, मतलब that's give you, मतलब एज ए कस्टमर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि yes, this guy is proper genuine, rather than giving some राइट। ara tricha answer, and calling या from there itself to the manager and showing that you don't know. That's give a wrong impression overall of करेक्ट करेक्ट yourself. करेक्ट। I understand. So no, that is actually a very right thing to do. कि you can always take a step back instead of just ramming कि हाँ sir, नहीं sir, शायद हो जाएगा sir. Instead of that, just take time, come back and talk to your manager and get back on the line. क्योंकि वो Correct. क्वेश्चन हो सकता है और एक से ज्यादा लोगों का भी हो। आपने काफी बार यहाँ पे मुकेश जी प्राइसिंग भी यू हैव मेंशन्ड व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन। So again, India is a very competitive market, and we know that because even within the company, the brand itself is releasing so many products at 500 rupees difference just so that it can capture every particular segment, every 1,000 rupees. We talk about mobile phones, we talk about earphones. Earphones, they start from 200, then 300, 350, 400, 450, 500. It goes at a difference of 50 rupees per se. Mobile phones go at a difference of 1,000 rupees with a very different, small difference in the features. So, what do you reply to your sales professionals, जो आपके sales agents हैं, sales team है, when they tell you कि sir ये ना competition हमसे अच्छा बेच रहा है, so we are sorry but we don't think कि हम इसे निकाल पाएंगे because competition has the market. So कैसा है ना, मतलब before starting your product, before starting your company, before making any product, you should have to clear picture कि आपकी पोजिशनिंग क्या है, जो अगेन इट्स एमबीए फंडा, जो बाद में समझ में आता है एग्जैक्टली, मतलब जब आप पढ़ते नहीं हो। पोजिशनिंग क्या है आपकी, व्हाट डू यू वांट टू पोजिशन योरसेल्फ, आई यू वांट टू पोजिशन टू फाइट एट द लोअर एंट्री लेवल, तो Mm-hmm. तो you want to fight with the mid level, you want to fight with the, you want to position yourself by the top premium level, ऐसा। Like if a car like Mercedes, मतलब nobody comes, no salesperson comes to him कि सर वो मारुति वाला सस्ते में बेच रहा है, आप सस्ता करो हम भी बेच देंगे Correct. आपको। हाँ, because they have clear price positioning and quality positioning, ठीक है। तो Right. तो आपको तो आपको कैसा है, आपको अपने आप को, आपके हर, आपको जो भी प्रोडक्ट आप जब बनाते हो ना, तभी आपको पोजिशनिंग क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी पोजिशनिंग क्या रहने वाली है, ठीक है। Right. वंस यू हैव डिक्लेयर दैट माय पोजिशनिंग इज 500 रुपए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। Right. तो यू विल स्टार्ट फाइटिंग विद द ऑल द 500 रुपए वाला कंपनी से। सो द यू कैन फाइंड कि सम कंपनी 500 रुपए की जगह पे 475 कर देगा, 450 कर देगा, या 550 कर देगा, बट ही विल नॉट, दैट कंपनी कैन नॉट कम 400 से कम, क्योंकि कब आ सकती है, जब उसको या तो बंद करना हो, या उस प्रोडक्ट को एंड ऑफ लाइफ करना हो, या उस Correct. मतलब वो उसको मार्केट से आउट होना हो। अदरवाइज, क्योंकि उन्होंने भी उस पर ही काम किया, उन्होंने भी उस 500 के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है। देखो, Correct. मार्जिन स्ट्रक्चर मोस्ट और लेस सब कंपनी का सेम ही होता है, मतलब थोड़ा 5-10% ऊपर नीचे होता है, किसी का कॉस्ट ज्यादा होता है, किसी का ऐसा, पर इट्स नॉट 20% 25% का फर्क आपको नहीं मिलेगा सेम सेम प्राइस Correct. पोजिशनिंग वाले प्रोडक्ट में, ऐसा करके। तो तो ये फाइट, माइनर 5-10% का फाइट तो हमेशा चलता रहेगा, देन यू नीड टू टेक केयर कि वो कैसे आपको 5-10% पर वो करना है। आपका सेल्स हाँ, पर्सन का ड्यूटी है, मतलब वही ड्यूटी है, सेल्स है। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उसमें कैसा होता है, उसमें फिर प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ता है। क्यों वो लोग पैसा, क्योंकि कैसा होता है, जब हम आपके पास
पांच छह प्रोडक्ट होते हैं जहां आपका मार्जिन 20-30% होता है, किसी में मार्जिन 10% होता है। तो मान लो आपको आपको मार्जिन कम करना है, तो आप आप क्या बोलते हो सेल्स वाले को, तू एक काम करे 20-30% वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेच ले, तो क्या वहां पे हम्म। कुछ पैसा बन जाएगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा हम बर्निंग कर सकते हैं ऐसा करके। तो ऑल करेक्ट दिस करेक्ट। यू हैव टू, बट अगेन। positioning is really matter, because if you position not, then you always fight some or other one. तो नीचे वाला से फाइट करोगे, ऊपर वाले से सबसे फाइट होता रहेगा आपका, जो कि पॉसिबल नहीं है मतलब ऐसा करके। राइट, एंड व्हाट आई कैन गैदर इज मींस, थोड़ा सा इसको मैं अपना एक्सपीरियंस भी अगर यूज कर रहा हूँ समझने के लिए, सो व्हाट आई कैन गैदर इज कि हर प्रोडक्ट का हर कस्टमर नहीं होता, इसीलिए आपको सबको एग्जैक्टली, बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश नहीं करनी चाहिए, करेक्ट है। Right. I remember, means even I'm using Rapoo products at home, and I know it's a premium wireless segment and competes with Logitech, if I say so. But definitely, I'm not looking at Rapoo as a competitor for HP mouse, because HP is a laptop brand, not a mouse brand. So, agar it comes to that, I would never compare both of them. I guess that is the basic understanding. Now, before I ask you for your expert opinion for our sales managers as well as sales executives जो ग्राउंड पे हैं, I would just want to know from you कि amid all this confusion that happened during COVID, जहाँ पे ऑफलाइन सेल्स बंद हो गई थी, right? Almost there were no markets open, that is a fact, right? And अगर आप ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो, जो कि ऑनलाइन भी नहीं बिक रहा था because nobody was delivering, right? उस टाइम पे सेल्स टीम का मोटिवेशन और वो जो एक फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं दब गया था। Slowly, gradually, markets are recovering. People are able to get that motivation back. However, अभी भी लोगों को push चाहिए कहीं ना कहीं पे। What are your outlook, or what are your hacks that you're using right now as a sales manager, country head, to motivate your team in the south, in the north, east, west? क्योंकि हर सबको अलग अलग मोटिवेशन चाहिए ना, तो क्या क्या आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, सो मैं मतलब ये सवाल है ना, थोड़े मेरे इंडस्ट्री के लिए अलग हो जाते हैं। क्यों बोलता हूँ मैं आपको कि आईटी एज ए होल, मतलब कोविड उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। क्यों बोलता अच्छा, हूँ मैं ओके। आपको, क्योंकि अगर आप देखे होंगे, सो द कोविड इज द मोस्ट लाइकली रीजन यू विल फाइंड कि सब जगह ऑटोमेशन हुआ। लाइक करेक्ट ऑफिसेज करेक्ट, में नो डाउट्स। लोगों ने घर में, जो पहले लोग घर में नोटबुक्स और डेस्कटॉप नहीं हुआ करते थे, लोगों ने घर में डेस्कटॉप नोटबुक लिया बिकॉज ऑफ उनको स्टडी करना है, किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है। राइट ऑफिसेज जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट नहीं था, एक मतलब लोग हमेशा रहते थे, वो उन्होंने उन्होंने तो एज ए इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री बेनिफिटेड मोस्ट इन दिस पर्टिकुलर कोविड। क्योंकि इवन आप हार्डवेयर इंडस्ट्री, इवन आईटी इवन। इट्स ट्रू, मतलब सबको वेबकैम चाहिए था, सबको हेडफोन चाहिए था, सबको करेक्ट। माउस चाहिए था काम करने के लिए। एंड आई मतलब, तो अभी हमारे केस में कैसा हुआ कि इवन वी आर एट होम, लॉट ऑफ फोन कॉल्स आर ऑटोमेटिकली कमिंग कि भाई मतलब दैट टाइम वी हैव नेवर सफर्ड ऑफ लेस डिमांड, रादर वी हैव सफर्ड लेस स्टॉक। क्योंकि क्या था, ओके। 3 महीने सारे इंपोर्ट्स बंद थे, करेक्ट। custom was not working, so the stocks are the major challenge। हमारे पास ऑर्डर्स की कमी थी नहीं, मतलब पूरे कोविड टाइम में ऐसा करके, ठीक है। ओके। तो फ्रैंकली दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव नेवर फेस्ड, मतलब एज अ मतलब क्योंकि बिकॉज आवर इंडस्ट्री वाज फुल बिजी इन whole first COVID, I'm saying the first lockdown for during the राइट first राइट राइट। wave of COVID, we are completely busy। 2 महीना तो सब कुछ बंद था। देखो first 2-3 months, I think I remember everything was closed. Even online was करेक्ट। not ready to deliver. Even vegetables hardly you will not get। वो तो first time हाँ, ऐसा बड़ी हुआ था। मुश्किल से मिल रहे तो थे। जैसे ही थोड़ा सा ओपन अप हुआ, मतलब आई माई सेल्फ आई एम सेइंग वी आर सेलिंग, मतलब सुबह से शाम तक हम बेचते, मतलब कॉल ही हम अटेंड करते रहते थे कुछ ना कुछ क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स बहुत सारे थे। और हमारे एंड अनदर थिंग कि क्या हुआ, लाइक इफ यू रिमेम्बर, मोबाइल कैसे ग्रो हुआ इंडिया में, एंड ग्रो होने के बाद कैसा है, आप खुद फील कि आपके पास जो आपने स्टार्ट किया होगा मोबाइल, और आज जो राइट आपके पास हैंडसेट है, दोनों का आप एएसपी देख लेना, इट मस्ट हैव 3-4 फोल्ड हाइयर। जो आपने अगर राइट 5,000 में खरीदा होगा तो आज 20,000 का मोबाइल यूज कर रहे होगे आप। अगर आपने दस राइट। हजार का मोबाइल लिया होगा तो आज 50,000 का मोबाइल खरीद रहे होगे।
सिमिलरली अगर आपके, क्योंकि आपके वो घर में आया, आपने यूज किया, तो अभी कैसा है इस कोविड में आईटी सबके घर, मोस्ट ऑफ घर में घुस गया है। किसी ने करेक्ट। सेकेंड हैंड लैपटॉप ले, किसी ने सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लिया, किसी ने सस्ता वेबकैम ले लिया, किसी ने सस्ता काम चलाने के लिए हेडफोन ले लिया। बट वंस ही स्टार्ट यूजिंग, अभी उसको when next time he will buy something new only or something good quality only, ऑफ थोड़ा कोर्स, बेटर ऑफ क्वालिटी, कोर्स। थोड़ा बेटर क्वालिटी लेगा। तो हमारा अभी पेनिट्रेशन जो पहले हम हमेशा हम फाइट करते थे कि हमारा आईटी का पेनिट्रेशन सिर्फ 10-12% है इंडिया में, वो ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। वंडरफुल, सो फॉर अस वंडरफुल। कोविड इज ए लाइक आई एम स्टिल सेइंग ब्लेसिंग इन डिसगाइज है फॉर हमारे लिए, तो ऐसा करके। बस दैट्स समथिंग की दैट इज वेरी यूनिक फॉर द आईटी इंडस्ट्री, आई गेस। मुझे लगता है ये चीज किसी और इंडस्ट्री इतनी कॉन्फिडेंटली कोई नहीं कह पाएगा कि हमारे लिए इट करेक्ट। वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Fair enough, boss. Now, ending this episode with your expert opinion for two category of sales professionals. सबसे पहले तो talking about the sales managers, people who are trying to manage their team, people who are trying to also manage hybrid mode work from home, as well as lastly, people who are trying to reach your level, somebody who's sitting at a sales regional manager, trying to reach a head level, VP level. वो जो लोग हैं उनके लिए आपके क्या तीन important टिप्स हैं? देखो फर्स्ट लाइक जो सबसे मेजर जो है ना, कि यू ऑलवेज थिंक फॉर द कंपनी। Okay. All of your steps must be गेटिंग बेनिफिटेड टू द कंपनी। क्या होता है, हम एज जो नीचे वाले हमेशा हम पार्टनर के बारे में सोचते हैं, पार्टनर को ए नहीं मिला, पार्टनर को बी नहीं मिला, पार्टनर प्राइस Right, मांग रहा है, right. पार्टनर ए मांग रहा है, पार्टनर कंप्लेन कर रहा है, पार्टनर वो कर रहा है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ कि कंपनी, अच्छा कंपनी ने इतना मेहनत किया, प्रोडक्ट बनाया है, तो अच्छी प्रोडक्ट है, इनको कैसे भी बेचे करके। सो द फर्स्ट स्टेप टू ग्रो योर सेल्फ इज स्टार्ट थिंकिंग फॉर द कंपनी, बिकॉज पार्टनर इज नॉट गोइंग टू ग्रो यू, कंपनी इज गोइंग टू ग्रो यू। Company Wonderful. is going All to right. make company is going to make you country manager, regional manager, vice president, whatever it be. So आप कंपनी के लिए सोचेंगे तभी कंपनी आपके लिए सोचेगी फर्स्ट। दैट्स Wonderful. द Wonderful. वाइटल पॉइंट, ठीक है। All right. सेकंड, you don't become a problem box, become a solution box. प्रॉब्लम बॉक्स क्या होता है, मैं आऊं आपके पास बोलूं सर वो मार्केट स्लो है, वो पार्टनर फोन नहीं उठा रहा है, वो Right. मिल नहीं रहा है, वो जब भी जाता है भगा देता है हमको ऐसा करके, ठीक है। सो Right. दीज Right. आर द प्रॉब्लम बॉक्स। वो तो कोई भी आपसे जो कम पढ़ा लिखा होगा वो भी आके हमको ये सारा बात समझा सकता है कि मार्केट बंद है, स्लो है, ये सारे फीडबैक तो कोई भी दे सकता है। Correct. बट Correct. Correct. इफ यू वांट टू बिकम अ सॉल्यूशन बॉक्स, यस, कि चलो स्लो है तो क्या कर सकते हैं, व्हेन यू कम अप विद द सॉल्यूशन टू मी कि सर मार्केट स्लो है, लेकिन आप एक काम करो, मुझे ना आप 10 एक सूटकेस बैग बनवा के दो, रापू ब्रांड लिखा हुआ, मैं ये प्लान से 10 स्टोर में बोलूंगा, आप इतने इतने क्वांटिटी उठाओ, मैं इतना इतना आपको एक बैग देता हूँ फ्री में, ताकि आप यूज कर सको। You just I'm giving an example. So when you come Right. up with solution as a management, I also like much कि हाँ चलो बंदे ने solution लेके आया खुद से ऐसा करके। Good. तो Good. Right. तो Right. that's the major thing. Don't become a problem box, become a solution box. Right. क्योंकि प्रॉब्लम बॉक्स तो कोई भी बन सकता है। वो उसके Correct. लोग एमबीए और पढ़े लिखे जो होते हैं, हमारा पीएन भी जाके मार्केट जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि मार्केट स्लो है, हाँ. लोग कमा रहे हैं, प्राइस ज्यादा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसके लिए एमबीए होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। Wonderful. Take तो care. and third is third is the word called integrity. Integrity मतलब क्या होता है, इंटेग्रिटी मतलब नॉट वो अच्छा, मतलब अच्छी बात है, अच्छा अच्छा नहीं, इंटेग्रिटी मतलब what you say you deliver, or if it is not, you convey the to the your nearest uh, manager or somewhere that says this is the issue, I cannot do, yes, after some time I will definitely do. So that is called restoration of integrity. आपने मुझे जवान दिया है, उसमें कैसा होता है, आपका खुद का आप खुद ही पावरफुल अपने आप को महसूस करते हैं। कैसे बोलता हूँ मैं आपको, आज आपको मैंने आज हमारी आपकी मीटिंग फिक्स हुई, मैंने आपको टाइम दिया, मैं 3 बजे आपके पास आऊंगा, ठीक Right. है, और मैं लेट हो गया, 3:30 बज Correct. गया। when I enter to meet you, I start how कैसे मैं start, अरे सॉरी मैं ट्रैफिक में फंस गया था मैं, तो तो Correct. मैं क्या थोड़ा नीचे हो गया आपसे, क्योंकि started with sorry, Correct.
तो हमेशा नेगोशिएशन में आप हम पे हावी रहोगे, एंड देन आल्सो यू विल नॉट फील कि चलो ठीक है। बट 3 बजे से 5 मिनट पहले मैंने आपको फोन किया, सनत मैं थोड़ा ट्रैफिक में अटक गया हूँ, आई विल बी लेट एंड आई विल रीच बाई 3:30। तो देखो हर टाइम जो आप बोलोगे वो कर नहीं सकते हो, लेकिन रिस्टोर तो आपके हाथ में है। मैं देन आई कॉल्ड यू करेक्ट, अर्ली आई गेट एंड द देन आइडिया। आई टोल्ड। तो उससे क्या होता है ना, उससे क्या आपका एक ओवरऑल पावर आता है, आप खुद में पावर आता है, और सामने वाला आपको जो होता है ना, वो आदमी जवान जवान का आदमी है, मतलब इट्स व्हाटएवर ही से ही डिलीवर। हाँ, तो मैन ऑफ अपने हिज आप वर्ड, आपका राइट। आप मैन ऑफ हिज वर्ड्स, करेक्ट वर्ड, मैन ऑफ हिज वर्ड। तो आपके आप अपने आप आपका वो क्या बोलते हैं, वैल्यू हर बन जगह पे जाती है। आपका आप वैल्यू बढ़ जाता है आपका, ऐसा करके। वंडरफुल, वंडरफुल, दीज आर वेरी वेरी, जिसे कह सकते हैं ना, ग्राउंड लेवल टिप्स फॉर एनी मैनेजर। मतलब इट्स नॉट अबाउट द फिलोसफिकल थिंग कि पंक्चुअलिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ ग्राउंड लेवल थिंग दैट्स फैंटास्टिक। आई एम प्रीटी श्योर जो सुनेगा दैट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू, कि फॉर द फील्ड एग्जीक्यूटिव्स जो कि एकदम लोअर लेवल पे काम करते हैं, द टेली कॉलर्स, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्ट सेल्स पर्सन्स, केओस पे खड़े रहते हैं, those people who are trying to start themselves in the industry and they are trying to become TL, or they are trying to understand कि मैं sales के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, उनके लिए आपका क्या 3 tips रहेगा? देखो, जो ऊपर का 3 टिप्स है फॉर एवरीवन, जो मैंने वाले वाले, लेकिन जो नीचे वाले के लिए बेसिक थिंग है कि आप कितना फास्ट सीखते हो कोई चीज को। देखो, Okay, सब सीखते हैं, एवरीबडी लर्न्स, ओके, right, बट हाउ फास्ट यू लर्न समथिंग इज दैट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आपका हर जगह ग्रोथ होता है। मतलब आप आज टेली सेल्स वाले हो या आप कियोस्क पे खड़े हो, आप कितना फास्ट आप वहां से चीजों को सीखते हो और कितना फास्ट उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, वही आपको डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी ग्रो होते हो। right, तो सबसे right, पहले कि आपका जो लर्निंग है ना, लर्निंग कर्व को बहुत फास्ट करना पड़ेगा आपको, कि right, मतलब एक ही चीज सीखने के लिए आपको पूरे 1 महीने वहां पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। और जितना correct, जल्दी आप सीखेंगे, आप उतना उतना आप फट से ग्रोथ में आएंगे। तो आप स्टार्टिंग में पूरे सीखने में बिलीव करो। एंड थर्ड तो मतलब जो मैंने 3 पॉइंट अर्लियर बोले थे, सॉल्यूशन बॉक्स बनिए, इंटेग्रिटी को फॉलो कीजिए, और कंपनी के बारे में सोचिए। आप यू विल नेवर, आप कभी पीछे नहीं right. रहेंगे, वो मेरी गारंटी है। Wonderful, wonderful. Thank you so much, Mukesh sir, ki you have said all of that, because all this is actually groundbreaking and ground reality for every salesperson. जो वो अपनाएंगे तो definitely they'll be able to land in a good position down the line wherever they want to see themselves. It was wonderful talking to you, and I'm pretty sure the people who have followed us till the end, उनको बहुत सारी value मिली होगी from your expertise and your this conversation. Thank you so much, Mukesh sir. It was wonderful थैंक talking to you. थैंक यू सर, Thank सेम ईयर, थैंक यू, सी यू, बाय। you. Which kind of sales, if given a chance, would you enjoy the most? Telecalling, inside sales, or field sales? Always field sales. Okay, so you have a thing for field sales. I can see Yeah, traveling, yeah. field sales. Fair enough. And again, on that same note, although I'm pretty sure the answer to this question, but would you prefer work from home or work from office? I would prefer answer would be work from office, rather work from ground, if I can say, because that's always because that makes more sense for me, because if I'm on ground, I'm meeting people, there are timelines to meet, and then you have to deliver results and so on and so forth. So first is work from ground, Right. second would be office, and then work from home. Right. So work from home is the last choice for you, anyways. Work from home में होता नहीं है ना, beyond a point it's too much of coordination, I feel यार. I mean, initially I loved it because 12-13 साल के बाद आपको एकदम से break मिला कि you have to be at home for I don't know how many days and months. So मुझे बहुत अच्छा लगा, and I enjoyed at least 60 days, the first 60 days. Then I realized कि यार this is becoming so much of coordination between one department to another department, और human touch ही गायब हो गया लाइफ में से.